Hey guys, this is Dhirsha here again from Newcastle, Australia, and I hope everyone is doing well and good in the law. So today in this video, we're just gonna talk about what kind of skills you guys should be learning or you should know if you guys coming here in Australia for your further studies. So in this video, I'm gonna talk about two types of skills. The very first one is the practical skills, and the second one is your technical or conceptual skills. Practical skills are those skills which does gonna make your life very easy if you guys moving to Australia for your further studies. So these are very basic skills. For example, driving, cooking, time management, or communication skills. I don't wanna put more stress on these skills because you guys must be aware about these skills from other videos, and it's very common skills, right? So the second topic of the video is the technical communication skills. If you guys coming, most of you guys gonna come here as a student, and you guys gonna spend a lot of time in the university, and if you go the skills which I'm gonna tell you in the technical skills section, it does gonna help you a lot throughout your uni time period and further in future as well. So let's get started with प्रैक्टिकल स्किल्स. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल स्किल्स में हमारे आते हैं ड्राइविंग, कुकिंग, टाइम मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स. अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास लाइसेंस है, आप यहाँ पे आओगे, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, और इससे आपको जॉब्स भी बहुत जल्दी मिल जाएंगी, क्योंकि जॉब्स हमेशा आपके जो प्राइम लोकेशन होती है उससे हमेशा 15 to 20 किलोमीटर्स फार वे होती है, तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने में इजी रहेगा. और ये भी कई बारी फैक्टर्स रिक्वायरमेंट्स भी होती है पर्टिकुलर जॉब्स की. सो ड्राइविंग इज़ मस्ट. कुकिंग आपको जॉब में हेल्प नहीं करेगी, बट इट्स डज गोना हेल्प यू yourself, because you guys gonna cook food for yourself. You don't gonna eat out every day, every night, every time, right? It does gonna it does gonna be very expensive for you guys as well in the student phase. So cooking आपको हेल्प करेगी, तो ईजी है आपके लिए. सो मैं टाइम मैनेजमेंट पे इतना मैं फ़िलोसफी नहीं देना चाहता. पता ही है टाइम कैसे मैनेज करना. अगर आप यहाँ पे आओगे, आप स्ट्रगल्स फेस से निकलोगे, तो आपको खुद ही टाइम मैनेजमेंट होता जाएगा आपसे. Apart from that, there are some skills which I would recommend you guys learning if you guys still in your country and you guys have enough time. So जैसे कि पहला स्किल आता है हमारा बारिस्टा स्किल. ये होता है जैसे कि आपको कॉफ़ी बनानी आती है. अगर आपके थोड़े से स्किल्स हैं, क्योंकि ये ऐसा स्किल है, ये टाइम लेता है सीखने में, है ना. अगर आपको कॉफ़ी बनानी आती है, यहाँ पर अगर आओगे, यहाँ पे इतनी सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, वो हेजिटेट करते हैं किसी को हायर करने पे एट इनिशियल डेज, बिकॉज दे have to give them a specific days of training. अगर आपको पहले से ही आती है, so it's gonna be very easy for you guys to make coffees in a coffee shop, and it's gonna be easy for you to get a job. So barista कोर्स कर लो, इंडिया में बैठे हो अगर आप, तो ये भी it's gonna be a good option. And the other skill I wanted to recommend for girls, if they coming here and they wanted to get some sort of quick job or kind of decent job with in a decent environment as well, so they can do hair and beauty courses as well. बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, वो जॉब्स उनके पास स्किल्स होते हैं जो भी ये हेयर एंड ब्यूटी के होते हैं, और उनको ईजिली जॉब मिल जाती है. बहुत कन्वीनियंट भी होता है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट होता है, सो बहुत ही I can recommend that one as well. For boys, I think driving, cooking, and these sort of skills. And the other skill I wanted to recommend, that is your communication skills. Communication skills ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में. अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ करने आ रहे हो और अपनी लाइफ फर्दर कंटिन्यू करने आ रहे हो यहाँ पर फ्रॉम अदर स्पीकिंग लैंग्वेज कंट्रीज़. सो मैं सबके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते, मेरे भी अच्छे नहीं थे, बट डे बाय डे जैसे ही आप अपने वर्क प्लेस पे टाइम स्पेंड करते हो, ऑस्ट्रेलियंस के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और मे बी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी क्लासेस होती है, आपके ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, तो धीरे धीरे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते जाएंगे. बट द अदर थिंग आई वांटेड टू से इज़ स्टार्ट मेकिंग एफर्ट. अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं होंगे. सो मैंने कहीं मतलब आफ्टर इट डज गोना मेक यू डिसअपॉइंट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दैट ओ इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2 years टू मी एंड माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर शिट. सो इवेंचुअली मैं रिकमेंड करूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दो. सो अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, इफ़ यू गाइज नो हाउ टू कम्युनिकेट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर्स और मे बी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स, इट डज गोना गिव यू मोर एज इन terms of jobs or in terms of what do you say, selection ratio, whatever it is, right? So work on that. So second type of skills मैं बताना चाहता हूँ वो होते हैं conceptual, technical, or you can say it as a knowledge as well, because these are not perfect skills. These are just kind of basic knowledge you guys should have if you guys coming here in the university to study your courses. So if you guys doing business or engineering courses, then you guys should keep in mind how to write a report. So for example, how to reference a text from a particular website or particular source, or how to do in-text referencing, or maybe what kind of referencing styles university accepts, like APA referencing format styles, because
if you're doing these kind of courses, you definitely gonna have assignments where you do have to write 2,000 or 4,000 words of passage or a report, or maybe articles in which you have to take material from different sources, and if you don't reference it back, then there's a term called plagiarism. If the plagiarism applied on your report, then that means you're gonna lose marks. So what is plagiarism? Plagiarism means if you're taking a content from internet or different source and you're not referencing it back, then you're gonna lose marks. So for that, so report writing could be a good option if you guys if you guys have a bit of time back in India, you can start learning how to write report, because you're gonna write heaps of report throughout your engineering or maybe business courses. सो अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज़ करने आ रहे हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने मैथ्स के बेसिक स्किल्स शार्प कर लो. फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री और मे बी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बिकॉज इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड यू हैव अ गैप बिटवीन योर स्टडीज़, और इफ़ यू हैवंट डन एनी मैथ्स कोर्सेज बैक विद इन द नेक्स्ट 6 or within previous 6 months, then you have to give a test called as MPT, मैथ्स प्लेसमेंट टेस्ट. ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कई मैथ्स कोर्सेज में इनरोल करने के लिए. और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसी में इनरोल करो, आप मैथ्स कोर्स आपको करना ही पड़ेगा. सो आपको एक बेसिक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस होती है, लाइक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व विद इन 60 minutes, एंड इफ़ यू डू दैट देन यू कैन इनरोल इन टू दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो अगर आप मैथ्स की जो बेसिक नॉलेज है उस पर वर्क करते रहें और मे बी फिज़िक्स भी थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहें, तो आपका जो लिंक है वो ब्रेक नहीं होगा, और इट्स गोना बी मोर ईजी फॉर यू गाइस टू एडजस्ट योर सेल्फ हेयर इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड. सो उसके बाद आते हैं IT कोर्सेज़. अगर आप IT कोर्सेज़ करने आ रहे हो यहाँ पर, सो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैंने अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट किया जो अभी इस फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया अगर कोई भी स्टूडेंट अभी यहाँ पे आ रहा है, अगर पाइथन, जावास्क्रिप्ट और एंटिटी फ्रेमवर्क टाइप ऑफ लैंग्वेजेस लर्न करना स्टार्ट कर दे, और इट डज गोना बी बेनिफिशियल फॉर देम फर्दर इन यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड. सो ये लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो अगर आप IT वगैरह कोर्सेज कर रहे हो. सो उसके बाद आती है मेरी सबसे फेवरेट फील्ड, उसको कहते हैं आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और यू कैन से एज डिज़ाइनिंग कोर्सेज एज वेल, और मे बी क्रिएटिव इंडस्ट्री कोर्सेज. सो अगर आप इस तरह के कोर्सेज कर रहे हो, सो बिलीव मी गाइस, यू गाइस हैव टू स्टार्ट मेकिंग और स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पोर्टफोलियो फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, बिकॉज बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड गेटिंग अ जॉब इन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इट्स नॉट ईजी. You have to show recruiters that some sort of work you have been doing since last few years in the university time period, to show how much effort you're putting in this field, and which eventually gonna help you a lot in getting jobs and further in future your career. So if you're doing architecture, start making your portfolio, or maybe you can start learning softwares as well. For example, AutoCAD, Revit, Cinema 4D, 3ds Max, SketchUp as well. Or if you're doing some sort of creative industry courses, you can learn Adobe Photoshop, and there are heaps of softwares which that's going to help you a lot. Even these days, not these days, I've been learning from since last few years. I've been playing with these different softwares a lot, and you wanted to have some reference of portfolio, what kind of portfolio it should be looking. My portfolio is not very best, I would say, because my field was a bit different, but I was working on something different. Still, you can have it a look on my Behance profile named as Shah_Viz, and I think that will give you some sort of idea. And this portfolio thing does applicable to all the courses, like for example, even if you're doing business, or even if you're doing engineering, or even if you're doing other some sort of different courses as well. My portfolio means start collecting your work or organizing your work in a way that you can show it to someone, and that guy can understand what you have been doing since last 4 years, and it can reflect your hard work. So इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको स्किल्स बता सकूं जो कि आपको हेल्प कर सके यूनिवर्सिटी लाइफ टाइम में, और मे बी फर्दर इन फ्यूचर एज वेल. बट जैसे देखा जाए, अगर जो प्रैक्टिकल स्किल्स मैंने बताया, ड्राइविंग, कुकिंग और टाइम मैनेजमेंट, ये और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये टाइम के साथ ही आएंगे, ठीक है ना. आप ड्राइविंग सीख सकते हो, जो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद है वो आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पे आओगे, ईज़िली सब कुछ हो जाएगा. सो जो टेक्निकल स्किल्स मैंने आपको बताई हैं वो आप सीख सकते हो, जैसे कि जो भी थी रिपोर्ट राइटिंग होगी आपकी, काइंड ऑफ पोर्टफोलियो थिंग एज वेल, एंड IT लैंग्वेजेस. Yeah, so thank you so much for watching my video, and if you guys like it,
then do subscribe my channel, and do let me know in the comments what sort of videos you want for the in future from me. And stay strong and be happy.